Hi guys. So this is a late night session for the current affairs of 20 and 21 October. Okay, let's just directly move on to that. Okay, so all PILs are focused on policy matter now. Genuine PILs are being missed. So this is a basic statement or a generic statement by the, of course, Supreme Court of India, Chief Justice of India, that जो PILs हैं तो बेसिकली अब क्या है कि पेयर्स हैं क्या पहले तो ठीक है तो पेयर्स जो हैं यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैं दैट आर पब पॉलिसी मैटर के लिए रह गई हैं ठीक है जेन्युइन जो पेयर्स होते हैं यानी कि जेन्युइन जो चीज़ है वो नहीं रह रही है उतनी ठीक है ओके लेट अस जस्ट गो टू द हाउ डू यू डिफाइन द पीआईएल सो इज अ लिटिगेशन ठीक है फाइंड बाय अ पार्टी विदाउट एनी लोकल स्टैंडर्ड ठीक है हु इज नॉट एग्रीड ऑफ कोर्स. So basically, why it is used? It is used in the general public interest. Okay. Now, it is also called as in the previous year. It is also called as the social action litigation (SAL), social interest litigation (SIL), and the class action litigation (CAL). Why the need of PIL? Okay. Why it is necessary? It is necessary to make the it is absolutely necessary. Why? Because to maintaining the rule of law, okay, and moving towards the peace of realization and the constitution. Basically, आपको what does PIL shows? This shows that we have a vindication of rule of law. It gives us a certificate that the law exists. Okay, and you have the effective access of the social and economic. You have effective access of justice for the reasons of social economic ठीक है मतलब बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए डायरेक्टली दिस इज अ जस्टिस ठीक है द मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ठीक आई हैव टोल्ड यू दैट सो पीएल इट इज जस्ट टू हेल्प द पुअर मासेस ठीक है इट इज नॉट एज एडवर्सरी कैरेक्टर व्हाई what do you mean by ordinary litigation and the ordinary so there are two types of litigations in general. So this is one is PIR and one is ordinary litigation. So अगर आप ये फाइल होती है कोर्ट्स में ठीक है तो ऑर्डिनरी लिटिगेशन तो इज द डिस्प्यूट बिटवीन टू लिटिगेटिंग पार्टीज ठीक है अगर टू लिटिगेटिंग पार्टीज में हाँ अगर टू लिटिगेटिंग पार्टीज में डिस्प्यूट चल रहा है ठीक है तो अगर उनमें से एक रिलीफ चाहती है अगेंस्ट द अदर ठीक है एंड द अदर अपोजिंग सच क्लेम और रेजिस्टिंग सच रिलीफ तो आपकी वो होगी आपकी ऑर्डिनरी लिटिगेशन नाउ कमिंग टू द पीआईएल इट इज ब्राउट बिफोर द कोर्ट ठीक है इट इज जस्ट टू प्रूव कि कुछ ट्रू है इसलिए आप इसको लेके आए हो ठीक है ऐसे मतलब ठीक है मुझे लगता है कि ये होना चाहिए ये ट्रू चीज़ है तो मैं पीआईएल फाइल कर सकता हूँ ठीक है ओके कमिंग नेक्स्ट सो बेसिकली इफ यू सी जो प्रिंसिपल देखो आप to the court in the exercise of power under Article 32 and 26. So there are certain petitions taken by the interested person, of course. Now you can say public interest litigations की जब हम बात करेंगे तो they can be filed against state and central government, municipal corporations. तो private entity के खिलाफ नहीं कर सकते ठीक है Moving next, so guidelines देख सकते हो आप ठीक है Now moving next, just to give you an idea. So this is the basic significance is given. Okay.
So you can see these are the directives. So I'll just explain in a while that what are the guidelines for admitting the PIL. Okay. तो PIL हर चीज़ का इलाज नहीं है आजकल क्या है PIL इज जस्ट फॉर द इट इज़ नॉट पब्लिक इंटरेस्ट इट्स पब्लिसिटी लिटिगेशन या पब्लिसिटी बोल दो या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल दो या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल दो जिस काम के लिए बनाई गई थी उस काम के लिए रही नहीं है ठीक है सो इट इज़ एसेंशियली मेंट टू प्रोटेक्ट बेसिकली द बेसिक ह्यूमन राइट्स जो वीक हैं डिसएडवांटेज पीपल है उनका उनको उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनको बचाना ठीक है ओके now let us just move further. MHA issues advisory to states and UTs to implement Section 479 BNSS to release the undeterred prisoners. So Ministry of Home Affairs से आई है advisory to issue of long retention of undeterred prisoners. ठीक है. The order legally mandates the state that Section 479 of the BNSS applies to all the undeterred irrespective of whether the case was registered before 1 जुलाई जब ये BNSS आई थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उससे पहले रजिस्टर्ड हुआ है केस या बाद में हुआ है डजेंट मैटर ठीक है बेल प्रोविजंस क्या है रेगुलर केसेस के लिए undeterred to be released if detention period reaches half of maximum specified imprisonment अगर आपको 3 साल की imprisonment दी गई है तो रेगुलर केसेस में अगर आपको रिलीज करने के लिए आपको 1.5 ईयर्स हो जाने चाहिए यानी कि अगर 4 साल की आपके पास इम्प्रिजनमेंट है तो रिलीज होने के लिए आपको 2 साल कंप्लीट होना चाहिए हाफ ऑफ द मैक्सिमम ठीक है मैक्सिमम इज 4 एंड हाफ इज 2 ओके फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स टू बी रिलीज इफ डिटेंशन रीचेस 1/3 ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट तो अगर मैं बात करूँ 100 ईयर की फॉर एग्जांपल लिटिगेशन है आपके ऊपर सॉरी लिटिगेशन नहीं अगर ऑफेंडर हो अपन बेल चाहिए आपको और अपने 100 साल की आपको इम्प्रिजनमेंट मिली है देन यू हैव टू अगर आपको बेल चाहिए तो यू हैव टू 33 साल हो जाने चाहिए आपको भी जेल में रहते हुए ठीक है आपको 33 साल बाद मिलेगी इट्स जनरल ठीक है जनरलाइज मीन्स अगर मैं 10 की बात कर रहा हूँ तो 10 का जो भी 33% आएगा सो लेट अस जस्ट गो विद दैट है ना so that will be the your releasing period now moving on further okay this is what where we are so we are at this now फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल आपको इम्प्रिजनमेंट है तो आपके 33% इज नथिंग बट द 3.3 तो 3 साल 3 महीने हो जाने चाहिए उसके बाद आपको इम्प्रिजनमेंट से रिलीज मिल सकता है अदरवाइज इसमें क्या है इसमें एक्सेप्शन यही है कि आपके पास आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए ठीक है जीवन पर्यंत जो होती है एंड द डेथ ठीक है डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए ओके so as per the National Crime Bureau India's prisons have at 131.4 occupants so it is more than 100% and 75 are undeterred ठीक है now moving on next तो हाई नंबर ऑफ अनडेटरियल प्रिजनर्स का बात करेंगे जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट होते हैं वो रीज़न है इसका इग्नोरेंस ऑफ लीगल राइट्स आप अरेस्ट हुए आपने देखा नहीं कि मेरा लीगल राइट ये था आप सिर्फ चले गए मुंह उठा के और आप अंदर ठीक है जेल में बंद हो गए यू डोंट हैव द आइडिया कि आप वकील कर सकते हो आप 50 चीज़ें कर सकते हो ठीक है डिले इन ट्रायल ऑफ कोर्स वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलक्टेंस ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट बेल ठीक है ऐसा होता है कि कोर्ट कई बार अब 50 चीज़ें देखनी होती है लेकिन कोर्ट की गलती थोड़ी प्रिजनर या फिर वट एवर एक्यूज आता है ठीक है कि ठीक है मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो इफ दिस पर्सन टू द लाइक थ्रेट टू द सोसाइटी फॉर एग्जांपल ये चोरी ही करता है थ्रेट तो भाई चोरी फिर करेगा कहीं जाके बाहर निकल के एक केस और बन जाएगा फिर चोरी करेगा फिर दोनों केसेस को बनाने के लिए ठीक है भाई तो अंदर ही रहे जेल में रहे ओके ऐसा किया जाता है कई बार इनएबिलिटी टू प्रोवाइड श्योरिटी okay in emission from okay this is emission on this emission
from rocket and satellite launches paused during environmental threat. Okay. That rocket launched per year has nearly tripled. ये एक साल में पहले है कि पिछले 15 साल से क्या हुआ है कि एक साल में मिनिमल अगर 15 साल पहले एक रॉकेट लॉन्च हो रहा था एक साल में, तो अभी आज के समय में लास्ट 15 साल के 3 हो रहे। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 2025, ठीक है। तो 2012, 2012, 2009 में अगर 2009 में एक रॉकेट लॉन्च हो रहा था पर ईयर, तो आज 2025 में 3 रॉकेट्स हो रहे हैं, ठीक है, पर ईयर। तो दिस इज जैसे जनरलाइज, ठीक है, 1 का 3 हो गया। अगर 5 हो रहे होंगे 2010 में, तो आज 15 हो गए, ठीक है, तो ट्रिपल्ड। And satellite object orbiting the planet has increased 10 times. Why it is 10 times? Because you can carry multiple satellites. So there is a record of 108 that has been broken, but of course 108 satellite has been launched at a one time. So that is more than, like, पहले अगर 5-10 जा रहे satellite, you are at now 80, or you are at 100. So you 10 times you have increased that. Space debris, a very big problem, ठीक है। So space debris is what? अगर कोई सैटेलाइट का लाइफ स्पैन है वो हर जगह में वो चीज चलती थोड़ी है ना, ये आपका फोन कब तक चलता है। देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ प्रॉपर स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ योर फोन। आप आज लो कल खराब हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, ठीक है। ठीक, तो सैटेलाइट्स का भी कुछ ऐसा है कि ऐसा है कि आज आपने प्लेस करा, ठीक है, इफ इट्स हैज अ गुड लाइफ इन जो भी है, देन यू हैव टू बी, लाइक, 5 साल मिनिमम मान के चलो कि 5 साल मैक्सिमम इसका लाइफ स्पैन है। 5 साल बाद क्या है, आप बाहर ठीक करने जाओगे उसको, यू कांट डू दैट। सो जो बाद में वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स अ डेब्रिस, कचरा बन जाएगा वो, ठीक है, भार बन जाएगा हमारे ऊपर। सो वो डबल हुआ है, ठीक है, 10 साल में। और एमिशंस, टॉक्सिक एमिशंस हो रहे हैं, ठीक है। देखो यार, वो हमेशा वहां तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसके साथ, ठीक। अब रॉकेट लॉन्चर्स के साथ एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट, L2O3 alumina and black carbon, ठीक है, जो सूट है। तो L2O3 and the soot absorb and trap the long wave radiation from Earth. So ये absorb कर लेता है और ट्रैप करके रखता है अपने पास जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, वार्मिंग ऑफ द रॉकेट, ठीक है। ओके, द वार्मिंग, this is the warming, the earth warming across a warmer stratosphere result in a faster ozone depletion. तो stratosphere अगर वार्मर होती जाएगी, ये लेयर है हमारे पास अर्थ की अपर लेयर्स पे, when it gets warmer, then you get ozone layer की जो डिप्लीशन है, यानी कि डिप्लीशन का समझ लो कि खत्म होने की कैपेसिटी समझ लो, वो ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। So measures of controlling pollution is what horizontal launch. So from under the wing of Boeing 747, it uses about by 20th of the fuel of typical ground-launched heavy lift rocket. ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल फॉर री एंट्री, अगर आपको सैटेलाइट की करवानी है अगर इन एनवायरनमेंट, तो यू शुड हैव एक्सीलेंट ट्रेजेक्ट्री। ऐसा होता है कहीं पे डिप्लीटेड ज़्यादा है ओजोन, यहाँ पे थोड़ी कम डिप्लीट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिप्लीटेड और ओजोन है, यहाँ पे कम डिप्लीट। तो यू शुड हैव एन एंट्री ऑफ योर सैटेलाइट इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम हियर, कि जहाँ से कम डिप्लीटेड हो जाए, ठीक है। 8 years of RSCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, सो पूरे देश का आम नागरिक। Now comes under the Ministry of Civil Aviation's launched in 2016, a vital component of national civil aviation policy, ठीक है। The first was inaugurated, you can see the flight was inaugurated to connect the Shimla to Delhi, 2017, centrally provided scheme, ठीक है। What is the purpose is to improve the infrastructure and connectivity, ठीक है। कहाँ की,
स्पेशल अगर मैं ले तो रिमोट एंड अनडिजर्व्ड कंडीशंस। और फिर देख लो आप चिन्मयस ऑफ रिमोट एरियाज एज कम्पेयर टू दिल्ली। ठीक है, सो यू शुड हैव एन गुड कनेक्टिविटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मासेस के लिए एयर ट्रैवल आसान करना। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ फेज इज गोइंग ऑन करेंटली। सो 600 किलोमीटर का एयर फेयर कैप्स। ठीक है, और टू मच at Food and Agriculture Organization World Food Forum, Global Family Farming Forum was launched. So, Global Family Farming Forum celebrated the essential role of family farmers in building sustainable agri-food system and tracking the impacts of climate crisis. So, comes under the UNDFF, basically United Nations Decade for Family Farming 2019 and 28, 19 and 28. जो इसका पॉलिसी मेकिंग का टाइम। ठीक है, अब इस इम्प्लीमेंटेशन टाइम हो गई। ओके, family farming is meant to be organizing agriculture, forestry, fisheries, pastoral, and aquaculture production that is managed by the operated by a family. It is predominantly reliant on the family labor of both women and men. So, in organizing those agriculture, forestry, fisheries, pastorals, aquaculture, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करना and by a family, तो both labors men and women वो भी family। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है इसका, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो बैकबोन यही रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ 70-80 ऑफ वर्ल्ड फूड वैल्यू टर्म्स यहाँ से आती है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, इनकम कंट्रीज, so grow diverse nutritious foods and support sustainable stewardship. So family farmers use inputs to maintain soil health but build climate resilient naturally. ट्रेडिशनल मेथड वो यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर देयर फूड, जो भी फूड है ट्रेडिशनली दे आर डूइंग द लैंड, how they use, how the methods are used for the like challenges, financial barriers आ जाते हैं उनके सामने, limited access of assistant cost, genetic। Okay, so Department of Chemical and Petrochemical jointly with 104 in Mumbai, basically largest composite event होता है ये। It is a big event of course Asia Pacific। पेट्रोकेमिकल के रिलेटेड, सो इंडिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया की एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी। तो बल्क में पेट्रोकेमिकल्स बनाना, ओके दिस इज एक्चुअली इट्स कम्स इनटू दिस केमिकल की स्पेशलिटीज। इनका क्या है, 9% ऑफ द ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड 1 ट्रिलियन बाय 2040। ठीक है, काला अजहर, what is this kala azar? It's basically a pathogen transmission, so it's a basic of pathogen। ठीक है, this is a scientific name visceral जो भी है leishmaniasis। ठीक है, public health problem, so country has maintained fewer than one case per 10,000 people for 2 years, meeting WHO criteria for elimination certificate। ठीक है, so World Health Organization का criteria, so this is a very important point। WHO's criteria for elimination certification is what? It is maintain fewer than one case per 10k people for consecutive 2 years। मतलब 2 years तक 10,000 पीपल में सिर्फ 2 को ये बीमारी होनी चाहिए, सॉरी 1 केस होना चाहिए, सिर्फ 1 को हो सकती है या 1 को ना हो चलेगा।
That would be very good. Basically, it's a प्रोटोजोआ पैरासाइट होगा, ठीक है। 20 लेishmania स्पीशीज से आता है ये, ठीक है। 20 टाइप्स की स्पीशीज है इसकी। ट्रांसमिशन इज बेसिकली हैपन बाय द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल्स, ठीक है। नाउ सिम्टम्स irregular bouts of fever, weight loss, enlargement of the spleen and liver, ठीक है, anemia। इंडिया के जो स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी है, ठीक है। ये दिस इज काला आजार इज अ second deadliest parasitic disease basically, ठीक है। फिर इंडिया में इसके बाद parasitic disease African baobab। So basically it is what, it is basically a tree of life, ठीक है। So basically कहाँ होते हैं ये, comes under the so basically African areas में पाए जाएंगे ये। These are the flowers like whitish large flowers, नाइट में ओपन होते हैं, ठीक है, और 24 घंटे में गिर जाते हैं, ठीक है। So contain tartaric acid and vitamin C means खट्टा होता है इसमें, ठीक है। Coming next, E-Shram one stop solution। So E-Shram is nothing comes under the Ministry of Labor and Development, of course. So they are going to let us just to integrate information on the beneficiaries of all society security and welfare schemes and organized workers on a single platform। तो उन सभी की बेनिफिशियरीज, ठीक है, एक जगह इकट्ठे, तो भी सोसाइटी की वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो भी अनरिकॉग्नाइज वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, ठीक है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को अवेयर करना स्कीम्स के बारे में, ठीक है। जो वर्कर नहीं होते हैं, जो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है, बेसिक वर्कर्स, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है कि भाई साहब ये स्कीम आपकी ये है, ये आप यूज़ कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली कंप्लीट डेटाबेस, ठीक है। इसमें सभी का होगा, जो भी पर्सन लेबरर्स होंगे, आधार। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, so it basically comes under the Rajasthan, of course। टाइगर डेथ हुई है यहाँ पे, है ना, मिसिंग कब है, रिप्रोडक्शन प्लान इन द रामगढ़ विषधारी रिजर्व, of course। So it comes under the Rajasthan fourth second tiger reserve in the country, of course। बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पड़ता है, विंध्य एंड अरावली दोनों में कंटिन्यूएशन के साथ है, मतलब जो एरिया रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए रखा गया, टाइगर रिजर्व के लिए है, मतलब उसी एरिया में पड़ता है। वेस्ट जो कि रंबल लेवल के ट्रिब्यूटरी जाती है। खैर एंड अमल्टास आर द मेन ट्री, you know, International Telecommunication Union (IT). So World Telecommunication Standardized Assembly (WTSC) those are jobs is held in the New Delhi. Now it is the first time that the ITU WTSC is hosted in India. It is first time। 1865 में कहते हैं the first international telegraph convention signed in Paris established international telegraph convention हुआ था, ठीक है। So which established the International Telegraph Union, the incarnation ITU की, ये ITU के अंदर ही आ गया, ठीक है। So what is this? This is a UN special agency basically। So it is used to harness innovations and connecting every. So forest fire CO2 emissions increase 60% globally। What is pyre? Pyrom. So pyrom biomes. So reflects the fire behaves differently across various ecological zones, ठीक है। So it is defined as a region where the forest fire कोई ऐसी रीजन, ठीक है, लगी 1 महीने बाद लग गई, इस वजह से लगी, इस वजह से लगी, ठीक है, ऐसे लगी, ऐसे लगी। नाउ कमिंग नेक्स्ट, आर affected by similar environment।
फायर पैटर्न जो है वो सिमिलर एनवायरनमेंट की वजह से हो रहे हैं, ह्यूमंस की वजह से, क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से। So thereby revealing the element pushing recent increase in the forest fires. ठीक है, it is basically helps the policy maker to access the risk, कैसे रिस्क को कम किया जा सकता है, कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सकता है। ठीक है, स्काई शील्ड, स्विट्जरलैंड joined the यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। सो व्हाट इज दिस? 2022 में रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में होगी, जब के बाद ये फाउंड आउट किया गया है कि तो इट इज बेसिकली आयरन डॉम, आपने सुना होगा, सिस्टम, इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इट इज जर्मन बेस्ड, मतलब ये जर्मन बना रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन सारी बना रही है मिलकर, इंक्लूडिंग द यूके एज ए मेंबर। इनिशिएटिव द मिसाइल्स आर व्हाट? हैरो 3, Israeli American sorry, heart of this initiative is the Arrow 3 and the Israeli American missile defense system that can intercept long range ballistic missiles. Arrow 3 is also a defense system and a Indian American missile. So Israeli American missile system is also an defense system. So UV photo detector. This is a memorandum signed between New Delhi and the development of diamond-based deep ultraviolet photo detectors. This is first time in India. It is an optoelectronic device that converts lights or other electromagnetic radiation into electrical signals. So what is this? UV photo detector is nothing but type of a photodetector optoelectronic device that converts electromagnetic radiations that are very harmful to the electric signal। ठीक है, हार्मफुल चीज़ों को आप एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो जनरेट स्मॉल करंट और वोल्टेज विच कैन मेजर्ड ऑफ कोर्स, specifically detects a deep UV light due to the diamond high UV photon sensitivity। ठीक है, ड्यूरेबल ऑफ हार्श कंडीशन ऑफ कोर्स, हाई एफिशिएंसी एट रूम हाई टेम्परेचर, यूवी इमेजिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बायोलॉजिकल सिग्नल्स के लिए, और ऑफ कोर्स मिलिट्री डिटेक्शन। लाइट हाउस टूरिज्म, सेकेंड नेशनल लाइट हाउस टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है ये? उड़ीसा में। ठीक है, ये बिगिन हो गया है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को इनिशिएटिव है उनका। मैरीटाइम जो भी हेरिटेज है उसको, कल्चर को प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके, तो अलाइन विद द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। ठीक, 75 iconic lighthouses across 10 coastal states and union territory has been developed। तो मतलब बेसिकली लाइट हाउसेज आर टू शिप्स जो होती हैं उनको गाइड करने के लिए, ताकि वो वापस आ सके। सरफेस से ही फेंक सकते हो आप लाइट, पानी से थोड़ी ना फेंकोगे। अगर मैं सरफेस से लाइट फेंकूँ, मैं शिप है मेरी बहुत दूर, लाइट हाउस है ये इधर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, मैं पानी में हूँ और ये ज़मीन पे है, और मैं एक हाई बीम इंटेंसिटी लाइट, मुझे पता नहीं लग रहा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास जीपीएस नहीं है, इधर को जाऊँ इधर को जाऊँ, 50 डायरेक्शन है यहाँ मेरे पास, मतलब ऑफकोर्स 8 ही डायरेक्शन है ऑफकोर्स, बट अगर मैं यहाँ को चले गया तो मैं दूर जाता जाऊँगा, मुझे नहीं पता लग रहा रास्ता कुछ। लाइट हाउस क्या करेगा? हाई बीम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फेंकता रहता है। ठीक है, ये, तो आप इस लाइट को अंधेरे में देख के पता लगा सकते हो मुझे इस साइड जाना है। ठीक है, so that is happening here। Trojan asteroid, so discovery of a Trojan asteroid for Saturn established the presence of the celestial body alongside with the giant planets। So this is a very important thing, Lagrange point। So what is this point? This is a point in a space, for example this is a Lagrange L4 band, गोलाई में ले रहा हूँ। So what happens in this L4 L5 जो भी, मतलब आप इसको ले लो। ठीक, अगर इस पॉइंट पे कोई भी एस्ट्रॉइड है, इसकी वेलोसिटी x, इसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर। ठीक है, पर लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस फॉर a very simple example, let us her velocity, this asteroid की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर। ठीक है, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये लेवरेज पॉइंट 5 है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर, तो इट इज मोर स्टेबल देन दिस पॉइंट। ठीक है, so that is leverage point। Okay,
इसका फ़ायदा क्या होगा, मोर स्टेबल होने का, आपको ईज़ी हो जाएगा रिसर्च करने के लिए, ठीक है। चलता रहेगा तो कैसे करोगे, और 5 तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए दे दी, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मिशन लूसी, so the first mission to explore the Jupiter Trojan asteroids. Okay, today so from my point of view, the important things are this festival happening in Odisha. Uh, this is an innovation, of course, and uh, who is making Iron Dome? Second, इसका पूछा जा सकता है European Sky Initiative. Okay, this is also very important. Telecommunications meeting being, and okay, then you get a physical geography type of thing here. कि ये जो टाइगर रिजर्व है, इट इज इन द कंटिन्यूएशन विद द रणथंबोर टाइगर, जोड़ा गया है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, उसमें ये उसको टच करता है, उसी की कंटिन्यूएशन। जैसे ये बफर एरिया है, ऐसा होता है कि ये आपका टाइगर रिजर्व है, तो ये बफर एरिया भी होगा इसका कुछ। ऐसा नहीं है कि यहीं पे तारे लगा दो, ये एरिया में जानवर तो नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा है कि तारे यहाँ बिल्कुल फेंस्ड होगा ये भी एरिया। बाई चांस अगर यहाँ से आप निकल जाते हो, कोई कोई एनिमल निकल जाता है कि ही इज विल बी इन बफर जोन, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द पर्सन आर इजी टू एक्सेस, लाइक होती है लेकिन कम होती है बफर जोन, ठीक है, जहाँ से आप देखते हो जाके, ठीक है। तो बेसिकली तो इवन गो इनसाइड ऑल्सो ना, बट इट इज़ वेरी टफ टू गो, लाइक फुल्ली प्रोटेक्टेड होकर जाना पड़ता है बस उसी में। बफर एरिया अगर आपको कल को बढ़ाना भी है इसको, तो यू कैन यूज़ द बफर एरिया। बफर एरिया यूज फॉर मेनी पर्पजेज, सो इसी बफर एरिया की कंटिन्यूएशन में लगते हुए आपका रणथंबोर, सॉरी रणथंबोर है, और दूसरा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। अगर मैं इसको रामगढ़ उस साइड टाइगर रिजर्व बोल दूँ तो कालाजार is also, you can see the statement that leads parasite disease, ठीक है। so it is basically a pathogen of skull leishmaniasis जो भी नाम है, and okay, African baobab tree of life कहते हैं इसको, तो one of course important, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस डेब्रिस, ठीक है। देन undetected treasure of course also very important, these are two are very also very important from the सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सब कुछ जब भी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, हाई कोर्ट पढ़ते हैं, गेट द PILs एक्सेट्रा, वी मूव फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।